Today we will do a new section, that is 1.3, how a growing middle class envisages the end of privileges. How the middle class imagined to put an end to the privileges, feudal privileges enjoyed by the first estate and the second estates. As you can see here, right in front of you all, I have prepared certain points through which we will cover this section. If you look at the first one, it's written there, peasants and workers revolted against taxation. Now we already saw that in France, King Louis XVI tried to impose what taxes on the people, especially on the third estate. So there were some indirect taxes and direct taxes involved in it. The peasants and workers were the first group of people who wanted to revolt, who wanted to fight against the taxation and the food security which was followed in the policy which was followed in the country. We already saw that in France there was a very gradual increase in the population which led to the increase in the prices of the bread. So they were the one, actually in every society, if you see peasants and the workers who belong to low status group, or you can say the low group of people, they are the one who suffer the most. So here in France also, peasants and workers were suffering a lot because they had to do what they had to provide services to the first estate and the second estate. Moreover, they had to pay all kind of taxes, sometimes directly to the state and sometimes indirectly on the products like tobacco and sugar which was sold in the market. Secondly, you can see it's written there, they lacked the necessary means and resources to start a revolution or to start the fight against the rule which was passed in the country regarding the taxation. So they did not have enough resources, so they did not have enough means, resources, weapons, or you can say to fight against what? To fight against the policies started by the state, by the ruler, and to bring about some social and economic change. So what happened in the 18th century, you will see that some certain group of people, those who were grouped as middle class, they thought that now it's the time for them to act and bring about the change in the society. So we can see the third point. This is a question also which is asked again and again in the paper, that which group of people, 18th century witnessed the growth of which group of people. So it was middle class. The middle class and mainly the one who were educated and prosperous people, wealthy people. They were the ones who thought that now it's the time to act against the taxation policy practiced in the country. Fourth point, you can see, if you remember the third estate, the first category included what? The big merchants, lawyers, officials. They were the one traders who have earned a lot of wealth. So they thought that whatever they are earning, it's out of their own hard work. Why they need to pay the taxes? So because they were earning money out of their hard work, out of their business, out of their knowledge. So they were strictly against this taxation policy, and they have enough means also. Now if you see the second paragraph, the second point, if you see, the peasants and the workers did not have enough resources. They could not start any revolution in the country because they did not have enough means. उनके पास ज़रूरतों का सामान ही नहीं था जिससे वो revolt कर सके, fight कर सके. But middle class people were actually some educated and prosperous people. They have enough resources also to go against the ruler's policy. So they were, if you see the fourth one, it's written there, they were prosperous and educated people who had earned money through overseas business and manufacture of certain goods in the country. Okay, so if you see, the third estate had a certain group of people who were classified as lawyers, administrators, officials. They were educated. Now they had the brain to think over. Remember, education brings about what? A revolution in the mind also. Some change in thoughts occur when you are educated. So what happened? They believed the sixth point. They thought that those who were enjoying certain privileges in the society was wrong. That policy was wrong. It had to be put to an end. So they thought what? They were the one who believed कि जो पोजीशन होती है सोसाइटी में वो कैसे डिटरमाइन होनी चाहिए. इट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, दैट इज ऑन द अमाउंट ऑफ गुड वर्क, bad work done by the person in the society. That should determine the position in the society, not by hereditary. कि अगर आपका बच्चा नोबल फैमिली को बिलोंग करता है तो वो नोबिलिटी में जाएगा, फिर उसका बच्चा नोबिलिटी में जाएगा. तो दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस इन द कंट्री. दे वांटेड व्हाट? कि अगर पर्सन को हाई पोजीशन, हाई स्टेटस मिल रहा है कंट्री में, वो उसके काम के द्वारा मिलना चाहिए, नॉट बिकॉज ही बिलोंग टू सम रॉयल फैमिली और सम नोबल क्लास ग्रुप ऑफ पीपल. The sixth point is very important. They believe person's social position must depend on his merit,
नो सोशल ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब ऐसा नहीं आप अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं, अच्छे घर में पैदा हुए हैं तो आपको उसी उस ग्रुप में डाला जाएगा। नो, it should be depend on what the amount of qualification, knowledge, wealth attained through its own hard work, that should determine what the position in the society. So what happened when people started thinking over about all these things, that they should be against, they should remove the taxation policy, they should fight for the food and bread in the society. What happened, there were certain flaws. There are three main philosophers about whom is discussed in this section. First one is John Locke. You can see I have made this box here. In his book, that was what, Two Treatises of Government, he has refuted, he has declared that this policy of what doctrine of divine and absolute right of the monarch should be put to an end, should be brought to an end. Why? Because this is something wrong which is practiced in the state. So he wanted to tell the people that doctrine of divine, जो nobility के जो लोगों को noble थे उनके बच्चों को जो nobility मिल रही थी, फिर उनके बच्चों को जो मिल रहा था रॉयल जो पावर मिल रहा था, इवन द मोनार्क्स उनके बच्चों को, ये सब चीज़ों को इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, मोनार्क जो रूलर है, जो अपनी राइट पावर जो प्रैक्टिस करता है कंट्री में कि उसका ही डिसीजन चलेगा, वो किसी को डिस्कस नहीं करेगा। ओके, ऑल दिस शुड बी पुट टू एन एंड इन द स्टेट. So this what theory was given by whom? John Locke in his book that Two Treatises of Government. Very important to learn. Refuted मतलब उसने proof करा था that this is something wrong. It is wrong. This practice is incorrect or it is wrong. What? The doctrine of divine. Divine मतलब जो noble थे, clergy थे, उनके बच्चे भी उसी ग्रुप में जा रहे थे। तो बस क्या रहा था, उनके आगे आने वाले जितने भी जो बच्चे थे, ये generation थी, they were enjoying the privileges by birth. So he wanted to put an end to this practice. ऑल्सो एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क क्या है? मोनार्क हमें पता है रूलर था, तो जो इसके राइट्स थे, पावर्स थे कि वो जो कहेगा उसका फाइनल डिसीजन होगा, वो जो पॉलिसी लेगा वो फाइनल रहेगा, ही विल नॉट डिस्कस विद एनीथिंग। ये एब्सोल्यूट राइट्स जो पावर्स थे, ही वांटेड टू पुट एन एंड टू दिस practice. So in his book that is Two Treatises of Government, he has strictly criticized these policies practiced in the state. Now the next one is what? Jean-Jacques Rousseau. Now the pronunciation is you will find multiple pronunciation on internet. So J is pronounced as Z in the YouTube channel which I have searched and looked for the pronunciation. So it is what? Jean-Jacques Rousseau. In his theory, he has given one theory. That theory was called what? The social contract. Can you see here? I have made a box out of it, out of the words. It's written here, the social contract theory. Now this contract theory is also very detailed, very important theory, but in your book it is just mentioned what? 2-3 lines are mentioned which states what? According to his theory of social contract, उसने बोला था कि लोगों के बीच में और उनके लीडर के बीच में कोई लिंक होना चाहिए, कोई सरकार बने, वो ऐसी सरकार बने कि जहाँ लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, लीडर्स के बीच में एक लिंक हो, जहाँ लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट तक जा पाएँ, सरकार के पास जा पाएँ, और जो गवर्नमेंट है वो उसका सोल्यूशन निकाल पाए। बिकॉज मोनार्की में क्या होता है, द रूलर डजंट थिंक अबाउट द पीपल, उसको जो अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू हिज विश एंड विम्स एंड फैंसीज ही पास द रूल्स एंड द रेगुलेशंस इन द कंट्री. सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था, ही अब प्रपोज्ड, कैन यू सी आई हैव रिटन हियर वेरी क्लियरली, proposed a form of government based on social contract between people and their representatives. जैसे हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंटेटिव्स, वी पीपल हु आर अबव 18 और 18 ईयर्स ऑफ एज, वी इलेक्ट आर लीडर्स, और वो लीडर्स क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को समझ के उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, पॉलिसीज़ पास करते हैं कंट्री में. सो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड वी आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, वी आर द वन हु हैव चोजन द leaders in the past. So there is a link, there is a contract between the government and the people. The third philosopher in the country was Montesquieu. Now in his book that is The Spirit of the Laws, he said that the government should be divided into 3 categories: legislative, executive and judiciary. Okay, you can see here as we practice in any democratic country, हमारी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, 3 organs होते हैं, 3 क्लासिफिकेशन समझ लो, जहाँ से कोई भी पॉलिसी का जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बिकम्स ईजी. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट? लेजिस्लेटिव, यहाँ पार्लियामेंट इंक्लूडेड होता है. एग्जीक्यूटिव आर द मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जिनका काम क्या होता है कंट्री में कोई भी चीज़ को लागू करना,
प्रैक्टिस में लेके आना, एक्शन में लेके आना. एंड द थर्ड वन इज़ वो जुडिशरी. जुडिशरी का काम क्या होता है? टू just listen to the people, grievances of the people and to decide and to take decisions on it. कोर्ट्स आते हैं इस कैटेगरी में, जहाँ कोर्ट्स में क्या होता है, लोग फाइल करते हैं अपने केसेस एंड दे डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. Now what happened when these three philosophers proposed their theories, people started discussing them in various places. अब लोगों को अलाउ नहीं था कि ओपनली वो डिस्कस कर सकें, ओपनली क्रिटिसाइज़ कर सकें, बिकॉज दैट टाइम क्या हो रहा था, किसका रूल था? मोनार्क का रूल था, रूलर का रूल था. तो जब भी डिक्टेटरशिप या मोनार्की वाली प्रैक्टिस होती है कंट्री में, वहाँ लोगों को आज़ादी नहीं होती है टू डिस्कस देयर पॉइंट्स ओपनली. पब्लिक में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पनिशमेंट मिलती है उनको. सो व्हाट हैपेंड, देयर आइडियाज़ वट एवर दीज थ्री पीपल हैव सजेस्टेड. फर्स्ट वन जॉन लॉक ने बोला कि डिवाइन डॉक्ट्रिन और डिवाइन एब्सोल्यूट पावर्स को मोनार्की कट कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए. जीन जैक्स रूस ने क्या बोला था कि देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन द लीडर एंड द पीपल. मोंटेस्क्यू ने बोला क्या था, जो सरकार बने उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करना चाहिए. देयर शुड बी डिवीजन ऑफ व्हाट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो ये वाले आइडियाज़ लोगों ने सोचना इन पे शुरू कर दिया था. लोगों का दिमाग अब चेंज होने लगा था. वो क्या चाहते थे? वो ऑलरेडी रेवोल्यूशन चाहते थे, चेंज का चाहते थे कंट्री में. सो दीज आइडियाज़ फर्दर चेंज देयर माइंड. ओके, द आइडियाज़ यू कैन सी वर डिस्कस्ड इन सलोन्स, coffee houses and spread among the people through books and newspapers. ओके, न्यूज़पेपर्स है, पता है, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स. पहले जब हमारे टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, तो आइडियाज़ कैसे स्प्रेड होते थे? बुक्स में लिखे जाते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपते थे, तो लोगों के द्वारा ये पढ़े जाते थे. आइडियाज़ वर read aloud for those who could not read and were not able to understand. And this was what? आइडियाज़ जो लोग अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, उनके लिए जो पढ़े लोग होते थे वो तेज़ रीड आउट करते थे, ताकि इन लोगों का भी दिमाग चेंज हो, इनको भी समझ में आए कि जो चीज़ें हमारी कंट्री में प्रैक्टिस हो रही हैं रिगार्डिंग राइज एंड प्राइस ऑफ द ब्रेड और टैक्सेशन पॉलिसी शुड बी चेंज, शुड बी ब्रॉट टू एन एंड इन द कंट्री. सो व्हाट हैपेंड अर्लियर इन आवर कंट्री ऑल्सो, जब हमारे कंट्री में भी ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम भी यही होता था. न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम था जिससे लोगों को आइडियाज़ बताया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो गलत है. ये न्यूज़पेपर हर घर में जाता है और फ्री, नॉट वेरी एक्सपेंसिव रहता है, कम रेट में रहता था, हर इंसान न्यूज़पेपर ख़रीदता था. और जो अनपढ़ लोग होते थे, तो पढ़े लोग क्या होते थे, उनको बुलाते थे, उनको समझाते थे कि ऐसा है, ये गलत है. क्योंकि जब तक आप किसी एक अनपढ़ इंसान को बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आता. तो सेम थिंग वाज प्रैक्टिस देयर इन फ्रांस ऑल्सो. सो हियर वी विल सी दैट द मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ पीपल नाउ they will grow and they will be against the powers of what? Monarch.